होपफुली आप सभी ने 1.1 अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो 1.1 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैं अभी आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें जो कि एक रिलेशन डिफाइन है इन द सेट आर। क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले जो नोटिस करना है कि ये किस सेट पे डिफाइन है। तो दिस रिलेशन इज़ इन सेट आर, दैट इज़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है, और इट कंटेन्स ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो हमें इसमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब हमें किसी एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है तो उसका जनरल मेथड होता है। लेकिन जब उसे नहीं प्रूव करना है, उसे फॉल्स प्रूव करना है कि दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, तो हमें सिर्फ एक एग्जांपल ही कोट करना होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम रिफ्लेक्सिव के लिए चलें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम इसे टेस्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर अ फ्रैक्शन 1/2. So 1/2 is a real number. Do we have 1/2 less than or equal to 1/2 cube? क्या ऐसा है? तो आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/8 आएगा, जो कि फॉल्स है। इट इज़ फॉल्स, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 is not 1/2, 1/2 is not an element of this relation, while 1/2 is a real number. So what we can conclude, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में जिसके लिए कि वो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कह पाएंगे। तो हमारा कंक्लूज़न है कि ये रिलेशन आर जो है इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट चीज़ के लिए चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम चलते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ पेयर ऑफ नंबर्स 1, 3. You have 1, 3, both real numbers. Now let us examine whether they are in this relation or not. So you can see that 1 is always less than equal to 3 cube. It is true. It is true. That means 1, 3, the ordered pair is in the relation R. But does 3, 1 belongs to the relation R? So we have to check whether 3 is less than equal to 1 cube. So you can see that 3 is less than equal to 1. Is it true? No, it is false. It is false. So what is our conclusion? Therefore we can see that 3, 1 is not an element of the relation R. Therefore you can conclude R is not symmetric. So we have checked whether it is reflexive, whether it is symmetric. Now it is turn for transitive. For transitivity, we consider again 3 real numbers. The real numbers are 43, or you may take any other, 4 and then 3. We have 3 real numbers all 3 are real numbers. Now let us check whether 43, 4 belongs to the set of real number or set in the relation R or not. So you can see 43, 3 belongs to R, as 43 is less than or equal to 4 cube, that is 64. So it is true. Now हम लोग आगे सेकेंड पेयर देते हैं, दैट इज़ 4, 3. So whether it is in R or not R,
So let us check. Okay, it belongs to R as 4 is less than equal to 3 cube, that is 9. 4 is obviously smaller than 3 cube, that is 27. So it is also true. Now, as you can recall the condition for transitivity, if a comma b is in the relation R and b is related to C, then a must be related with C. So in this case, this relation to be transitive, 43 must be related with 3. So 43 for let us check for 43 and 3. What do we have? 43 is less than equal to 3 cube. Do we have 43 less than equal to 27? Do we have? No, it is not true. So what is our conclusion? 43 comma 3 does not belongs to the relation R. So the finally R is not transitive. Not transitive. Dear friends, you must focus on each and every question and find out whether you have attempted it properly or not. आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद ही आप फिर से इसको देखेंगे. अगर अटेम्प्ट ना किया हो तो पहले अटेम्प्ट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 9th का फर्स्ट पार्ट है 1.1 का. सो R is a relation given by it contains ordered pair AV such that it modulus of A minus B is a multiple of 4. It is a relation defined in the set A which contains integers from 0 to 12. So as in systematic way we go for reflexive. First reflexive के लिए हम लोग चलेंगे. तो reflexive में हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कोई भी इंटीजर हमें लेना है. फॉर ऑल इंटीजर्स वी मस्ट हैव ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. तो क्या ऐसा है? इज़ इट ट्रू? सो इस आर रिलेशन में होने के लिए ए माइनस ए को मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. तो ए माइनस ए का मॉडुलस हमें देगा 0 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला? ये रिलेशन आर में होने की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसीलिए ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए आर में होगा. और ऐसा है इसीलिए आर रिफ्लेक्सिव होगा. आर इज़ रिफ्लेक्सिव. अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए चलेंगे. तो सिमेट्रिक होने के लिए सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है ये कंडीशनल है. तो सिमेट्रिक होने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में सच दैट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट है. तो आर का एलिमेंट अगर ये है तो इस आर में होने की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करेगा. और आर में होने की कंडीशन है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल of 4. So if it is a multiple of 4, that means we can assume a minus b mod is equals to 4 into m. What is m? M is any integer. So this will gives you a minus b equals to plus minus 4m, and this will gives you b minus a is equals to minus plus 4m. So which finally in turn gives you mod of b minus a is equals to 4m. That means is divisible by 4. So we can conclude that b comma a is in relation R, and that in turn implies R is symmetric. Now we go further for next, that is transitive. So in transitive you have to take two conditions. So what are those two conditions?
we have to assume that we have three elements, three integers in the set A, such that ordered pair AB is in the relation R and ordered pair BC is in the relation R. So this gives you, अगर ये R में है ऑर्डर पे भी, तो R के होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और R में होने की कंडीशन है A माइनस बी का मॉड जो है मस्ट बी डिविजिबल बाय 4. सो वी कैन कंसिडर इट एज 4m, एंड B माइनस सी का मॉड भी 4 से डिविजिबल होगा, वी कैन कंसिडर इट एज 4n. व्हाट इज m and n? M and n are integers, and this gives you A minus B is equals to plus minus 4m, and B minus C is equals to plus minus 4n. When you add these two equations, this is first and this is second, when you add these two equations, you are going to get A minus C is equals to plus minus 4 in bracket m plus n. So this finally gives you modulus of A minus C is multiple is 4m, that is multiple of 4m plus n. So m is integer, n is integer, therefore m plus n is integer. So we have proven m A minus C is a multiple of 4. So you can conclude here that R A comma C belongs to the relation R, and hence R is transitive. So as R is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. This was the first part of this question. Our second part में हमसे कहा गया है कि find out all the elements which are related to 1. So we are trying to find out the elements which are related to 1. तो 1 से related कौन कौन से element हैं set A के अंदर? तो 1 से related 5 हैं, 1 से related 1 खुद से related है, 1 से related 9 है, और इसके अलावा और कोई element 1 से related नहीं है. तो the set of elements which are related with 1 is 1, 5, 9.